Okay, yes. So now, where was I? Yeah. So before, हमें सबको पता है that physical warm up is very very important for us, right? And all of us do it. क्यों अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? Physical warm up injury हो जाएगी. हम में से यहाँ पे mental warm up कौन करता है? Just raise your hand. तो mental warm up करता है? See. Now No, the ma'am. next time आपको अपने आप से पूछना. Okay, Shian does it. How do you do your mental warm up, Shian? I want to know. All of us want to know. Yeah. Ma'am, more than mindfulness, I like to do visual before my practice because I think I'm a type of person जिसको breathwork करने से काम हो जाता हूँ, and I don't play so well when I'm too relaxed or too this. I like to be a bit good. See, जो I like to श्यान be a जिस bit बारे में बात कर energized. रहा है, very good. This is what he's talking about is arousal regulation. Now, अगर जो पहला सब step हमने बात करी थी, that was awareness, right? Once you become aware of yourself as a player, आपको ये समझ आएगा आप क्या शांत, जब आप laid back होते हो, बिल्कुल शांत, तब आप अच्छा कर perform करते हो, या जब आप बहुत ज़्यादा pumped up होते हो, तब आप अच्छा perform करते हो. Now, that's a very good level of self-awareness, Shan. Proud of you. Also, again, like I said, there are some breath work which will calm you down, and there are a lot of breath work which will elevate your level, like they will charge you. So for example, there is a Wim Hof technique, okay? There are DMT breath works. So ये वाले वो breath works होते हैं जो आपको focus कर देंगे और आपका arousal level increase कर देंगे. तो हम तभी कहते हैं ना कि अपना self awareness number one step इसलिए है. आपको पहले अपने आप के बारे में समझ आना चाहिए कि आप क्या शांति में अच्छा खेलते हो या आप बहुत ज्यादा बहुत aggressive होके अच्छा खेलते हो. So that is very important for you to understand what is your arousal level, ठीक है? But again, even if you like playing in high arousal, early in the morning when you wake up, उस टाइम पे breath work अगर हम शांति वाला भी करें, that will also be very helpful for us because we are increasing the oxygen supply in our brain breath work के साथ, और हमें वो focus और होने में help कर रहा है, ठीक है? और अपने practice से पहले आप हाई अराउजल वाला ब्रेथ वर्क कर सकते हो और उसके साथ आप अपने विजुअलाइजेशन को क्लब करो. अगर हम अपनी विजुअलाइजेशन को ब्रेथ वर्क के साथ क्लब करना शुरू कर देंगे तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है? आई विल आल्सो कवर दैट अप इन अ व्हाइल, बट मेन पार्ट क्या आता है? ब्रेथ वर्क किया आपने? यस. I have a question. Is this Manvendra? Who's this? अच्छा, श्यान. Okay. Early morning में करना चाहिए breath work, I understand, but I'm talking about my personal thing. I've tried a lot of times to do mindfulness in the morning, but morning में क्या होता है? I have so much energy in the morning because मतलब सुबह energy ज़्यादा रहती है obviously. So I have so much energy that I can't control my thoughts even after doing mindfulness for 10 minutes. So I like to do mindfulness at around 2:30 afternoon. I have मेरा time वो है, I do. Morning में I've tried a lot of times, but I'm not able to, calm myself down that much. Understood. Okay, now you have to understand what happens in the morning. Now you have to understand one thing. I think मैंने group पे within पे बहुत बार ये चीज डाली है. But the first 20 minutes of your morning and the last 20 minutes of your day, basically दिन के पहले 20 मिनट और दिन के आखिरी 20 मिनट आपके सबसे ज्यादा ताकतवर minutes होने चाहिए. ताकतवर as in it has to be the most powerful time of your entire day. So the first thing in the morning when you start doing breath work, you are actually giving a signal to your mind, I control you. ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब mind should work according to me or I should work according to my mind? बताओ, सब बताओ. The mind should work out according to us. Mind should work according to us. Got it. Okay. So अभी जो श्यान ने बोला, जो श्यान is saying mostly 99% of the people have the same issue. But इसका मतलब क्या हो रहा है कि we are working according to our mind because हमारा mind हमारे कंट्रोल में रहा ही नहीं है. अगर हम बात करेंगे पहले के लोग, the people right now also the monks हैं जो बहुत top level के athletes हैं, उनका दिमाग उनके हिसाब से चलता है. And now I think somewhat even I can say a little proud of myself that मेरा दिमाग भी थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से चलता है. But it was not always like this. When I used to play, I was always working according to my mind. So this is where we have to learn to make our mind work according to us.
अभी क्या है, सुबह उठते ही मेरे पास बहुत एनर्जी है, ठीक है, मेरे पास बहुत थॉट्स हैं, फाइन, आई एम गोना स्टार्ट विद ओनली 5 मिनट्स। तभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आंख बंद करो और एक चीज पे फोकस करो, नहीं, हम जब अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, हम जब उसको अच्छे से म्यूजिक में क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे एलिवेटेड सॉन्ग्स हैं, सब्लिमल्स हैं, जो आपके ब्रेन को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। तो हम वैसे वाला म्यूजिक लेते हैं और हम सुबह सुबह, अगर आपने 10 मिनट्स अपने माइंड को कंट्रोल कर दिया, तो आपके माइंड को क्या सिग्नल गया है, दैट दिस पर्सन इज माई मास्टर, ही इज नॉट माई स्लेव। Okay, so this is why we have to learn to do breath work in the morning also. That is why it becomes very, very powerful. And I will just be very honest with you. I think just 7 months back, when I was working with Pro Kabaddi, is when I started. So earlier, even when I was an athlete, we used to wake up at 5 o'clock, but I'm jati practice, we used to do practice and all of that. So now, after being so much into neuroscience and sports psychology, okay, everybody please mute yourself again. Okay. So now, after so much of researching, understanding athletes and everything, I have come to realize how important it is to wake up in the morning and own our day. अपने दिन को ओन करना, और उसको ओन करने का तरीका सबसे पहला होता है ब्रेथ वर्क करना। सबसे पहला तरीका, अगर आप सुबह उठो, आई एम नॉट इवन सेइंग गो एंड सिट ऑन अ चेयर, यू गेट आउट ऑफ योर बेड, जो मैं आपको अभी ऑडियो भेजूंगी यूट्यूब वाली, जस्ट प्ले दैट, close your eyes and just focus on your breath. Starting में, even if you can do it 5 minutes, 2 minutes, do it. एक बार रिकॉर्ड करो कि आप मैक्सिमम कितना देर कर पा रहे हो। बहुत बार थॉट्स लेफ्ट राइट जाते हैं, मेरे अभी तक जाते हैं, but then get your thoughts back in the center, get your thoughts back in the center. And now I will quote some of my athletes, one of my athletes as small as 15 years, or somebody as probably as 32 or 33. They say that every morning when they wake up, they look up to doing the breath work. अब उनको ऐसा उठते ही लगता है कि यस, मुझे ये चीज करनी है, because this is what is making me powerful. ये चीज मुझे हेल्प कर रहा है, तो वो हैबिट के साथ आता है, ठीक है। So this is a habit that we have to. तभी तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या था, आज के सेशन का मतलब है हैबिट्स डेवलप करना है। इट्स नॉट दैट कि एकदम से आ जाएगी, ये टेक्निक्स नहीं है, ये हैबिट्स हैं, हमें इनको प्रैक्टिस करना है, हमें इनको और ज्यादा इम्प्रूव करना है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोना गेट बेटर ऑल्सो। ओके, सो स्टार्टिंग में नो मैटर कितना टाइम, कितने थॉट्स आ रहे हैं, बट जस्ट सिट विद योरसेल्फ, बी पेशेंट, बिकॉज दीज आर द हैबिट्स दैट विल टेक यू टू योर बेस्ट परफॉर्मेंस वर्जन। सो अपने दिन के सुबह के 20 मिनट्स एंड लास्ट के 20 मिनट्स सोने से पहले, यू हैव टू मेक इट मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट योर डे। इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? ओके, कूल, लवली, ठीक है। So this is where we talk about Hanji. Yes. Ma'am, I want to ask, when we get Ma'am Lakshmi Narayan Mishra. Yes, Hanji Lakshmi, batao. Ma'am, when we get up after doing our all the morning activities like brushing up and washing our face, after that we have to see, ये आपकी मर्जी है, honestly this is your wish. आपको जो ठीक लगे, अगर कभी कभी आपको लगता है कि यू वेक अप एंड आपको अच्छे से फ्रेश होके फिर आपको बैठना है, आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगे आपको उठते ही बैठना है, मतलब उठते ही बैठना है, तो आप तब कर सकते हो, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल उस समय होता है जैसे आप तुरंत उठे हो। So there was a time when I think I introduced this technique to one of my athletes, and this is when they were preparing for their world championship, ठीक है। और फिर मेरे को एक एथलीट ने मुझसे एक शेयर किया कि मैम, मैं उठती, जब मेरे को ऐसा होता है ना कि मैं बस उठ रही हूँ, वो अपने, इफ शी हैड टू वेक अप एट 4:30 फॉर प्रैक्टिस, शी स्टार्टेड पुटिंग एन अलार्म फॉर 4:20, एंड लाइक मैं वो 4:20 का अलार्म एकदम बंद करके ना, बिकॉज आई नो अभी मैं बिल्कुल नींद में हूँ, दैट इज व्हेन शी यूज्ड टू स्टार्ट डूइंग हर ब्रेथ वर्क एंड डू द विजुअलाइजेशन, बिकॉज दैट इज व्हेन योर माइंड इज मोस्ट पावरफुल, जब वो आधा नींदों में होता है, बिकॉज दैट टाइम आवर कॉन्शियस माइंड इज नॉट ओपन। तो every idea that you're putting in, every thought, कि अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुली and I'm just automatically I do my breath work for 10 minutes and then I do my visualization, because everything that you've put in has gone into your subconscious mind, ठीक है। But now it's up to you guys, whatever suits you. कुछ भी ये नहीं है कि इसी टाइम पे करोगे तभी मदद फुल करेगा, ठीक है। So you have to suit yourself, you have to use your own sense here, okay, cool। अब हम आते हैं फोर्थ चीज पे। Now this is gratitude. I am sure you hear about. Acha, mute yourself, everyone. Okay.
मैम एक क्वेश्चन है मेरी। Manvendra, yes, tell me. मैम विजुअलाइजेशन करना ठीक है, मैं बस समझ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन जैसे आप सुबह बोल रहे हो, मनवेंद्र, आज आवाज बहुत कट रही है, आवाज बहुत कट रही है, सिग्नल अच्छा नहीं है। मैम जो विजुअलाइजेशन करना है वो सिर्फ मतलब सुबह उठ के करना है, वो आज सुबह आज देख कर करना है, फिर लॉन्ग टर्म विजन आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, जो आपने बोला उसको अचीव करने का See, देख। मनवेंद्र, just hold on this thought because I will be covering this up, ठीक है? अभी मैं इसको कवर Okay. करूंगी। Okay, all right, okay, cool. अब हम बात करते हैं gratitude की। I'm sure हम अब कहीं पे भी देखें, we all hear about gratitude a lot, ठीक है? But do we actually practice it? Ask yourself, like honestly, fine. And now it comes, if we practice it, do we practice it the right way? अब क्या होता है, gratitude क्या है? People, actually, I won't say people, scientists ने, again, backed by thorough research. Because see, I am somebody, anything that I talk about, anything that I make my athletes practice, I want it to be backed by research. I want evidence उन चीजों में, तभी मेरा दिमाग उस चीज को accept करता है, ठीक है? फिर अब gratitude हम कैसे practice करेंगे? आप सुबह उठे, I am also giving you ideas for your morning routine, ठीक है? आप सुबह उठे, जैसे आप सुबह उठे हो, आपने अपना ब्रेथ वर्क किया, परफेक्ट। उसके बाद ऑब्वियसली हम आपका पहले विजुअलाइजेशन ऐड करेंगे, बट होल्ड ऑन विद दैट पार्ट अ लिटिल। तो आपने जब अपना ब्रेथ वर्क और अपना विजुअलाइजेशन किया, कीप योर जर्नल गाइस। एक अपनी ऐसी डायरी रखो, एक ऐसी अपनी किताब रखो जहां पे आप अपने आप को एक बेटर इंसान बनाओ। एंड ट्रस्ट मी, आई गेट दीज थिक जर्नल्स, ओके, एंड आई जस्ट फिनिश इट ऑफ एवरी मंथ। एंड देन when you practice it, you have no idea how much ideas will you get. And now my athlete, जिनको लिखने से भी प्रॉब्लम होती थी, जब वो अब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, उन्होंने अपने आप को जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन वर्क शुरू किया है, दे स्टार्ट लाइकिंग इट सो मच, बिकॉज आपको समझ आएगा कि लिखना एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। अब आप ग्रैटिट्यूड कैसे लिखोगे? एवरी डे इन द मॉर्निंग राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। वेरी वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ऐसे नहीं है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, नो, दैट्स नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है बहुत स्पष्ट, बहुत प्रिसाइज होके लिखो। इट कुड बी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मदर बिकॉज ऑफ हर अनकंडीशनल लव फॉर मी। that's what it is. It's specific, right? Or I'm so grateful for my mother because उन्होंने कल ये चीज करी। I'm so grateful for my maid because she's just so polite and whatever. और एक और सेकंड रूल क्या होगा? एक तो है कि पहला बहुत स्पेसिफिक है, सेकंड रूल इट्स गोना बी नो रेपिटेशन। आप 1 महीने तक उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते हो, उस इंसान को भी रिपीट नहीं कर सकते हो। So now you're gonna come up with so many ideas, so many different ideas every day. What are you grateful for? तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? I'm so happy and grateful for ... That is what you have to write. Is that clear? अब तो एक चीज है, मैं उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ जो मेरे पास है, ठीक है? अब आता है मेन ट्विस्ट ग्रैटिट्यूड का। एक चीज कही जाती है, हम लोग ना बहुत ग्रीडी हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो मेरे पास है उसी चीज वही मेरे पास है। But what if I tell you, if you start practicing gratitude for the things that you want in your life, they happen to you a lot quicker. You start attracting them a lot quicker in your life. So for example, whatever your goal is, yes, Kunal? Ma'am, like how, like if I don't have something, I'll just start assuming that I have it and just writing it that I'm grateful for this thing. That's how it is. What, the thing that I was mentioning right now? Yeah. Or like not having your gratitude, nothing to be grateful for anyways. Like that's what you're asking? No, I'm asking that one thing that you told, that the things that you're grateful for, which you Yeah. already have. The other thing Yeah. is that you want something which you don't Yes. have. Then for that, Yes. how do you practice Yes, gratitude? exactly. That's what I'm coming at. Na? That's what I'm just coming. I'm going to describe. So for example, whatever your aim is, whatever आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ठीक है? अपना एक गोल बना लो अगले 1 महीने के लिए, जो आप एक गोल, ठीक है? That this is what you want to achieve. For example, somebody, it could be becoming India #1, somebody it could be becoming state #1. जो भी आपको दिल से लगता है कि yes मुझे ये चीज अचीव करनी है, fine. Now what you're gonna write is, I'm so happy and grateful for that now I am this. That's it. That's all that you have to write. Now this is, हमारे पास वो चीज already है. yes, exactly. You have to write it in the present tense.
Now this is something that you will write every day in the morning 5 times. अब मेन एक और चीज बता देती हूँ, with your left hand. जो भी आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है आप उसके साथ ये चीज लिखोगे. मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा. ओके आपका गोल क्या है राजीव? मैम इस मंथ की मेरी गोल है मैम कि जो मेरे फिटनेस में एक लेवल चाहिए जो मैंने लिखा राइट डाउन किया हुआ हूँ उसको कि Okay, आई ठीक शुड बी इतने केजी की रेप्स आनी चाहिए मेरे, ऐसा है. ओके फाइन. सो व्हाट यू गोना डू इज कितने केजीस की रेप्स हैं बताना एक बार. मैम मेरी डेडलिफ्ट की है आई हैव टू अचीव दिस मंथ 80 kg ऑफ 12 reps. ओके सो बेसिकली ओके ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक प्रिसाइज गोल है, व्हिच इज वेरी गुड. जितना हम स्पेसिफिक होता है अपने गोल के लिए उतना हेल्पफुल होता है. ठीक है. So what you could do is you can just write, I'm so happy and grateful that now I do deadlifts of 80 kgs. बस खत्म. बेसिकली क्या है कि आप कर रहे हो. अब बहुत लोगों का एक तो ये बहुत स्पेसिफिक गोल है, मंथली गोल हो सकता है. ठीक है. एक आपको अपना एक लाइफ का जो मेन गोल है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम द इंडियन टीम प्लेयर, दैट नाउ आई रिप्रेजेंट माई नेशन, नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस गेम, कुछ भी. तो वो क्या है, आप ये दोनों एस्पेक्ट्स में लिख सकते हो. एक आप एक जनरल लिख सकते हो जो आपका लाइफ का गोल है, और एक आप अपने इस मंथ का गोल लिख सकते हो. और इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. प्रेजेंट टेंस में आई एम दिस पर्सन. हमें लाइफ में वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए. देखिए one of the most strongest courses that I did in my life and the certification was by Dr. Joe Dispenza. He's a neuroscientist. उन्होंने अपनी इतनी रिसर्च के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन बताई है जो मैं आपको आज बता रही हूँ. उन्होंने बोला था we don't become what we want to become. Okay, we don't get in life जो हमें चाहिए. We only get in life what we are. Okay, so I will just tell you, if you feel you are confident, if you feel that you're already the best player, that is when you'll become the best player. If you want to become the best player, तब आप नहीं बन पाओगे. So you have to already assume that you are this person. You already are this person. That is when you are going to become that person. Is that clear? Whatever you want to become. Yes. Yes. Kunal? Sorry, I have one question. So for goals for 1 month, like I want to play 1 under par in July or in August. So now one day I have written that, okay, I'm so grateful that I shot 1 under par. So next day, as you said, there's going to be no repetition. Then next day, should I also write again that I have to? Kunal, this no. See, champ, you have to understand. When I said the 3 things जो आपको लिखनी है हर दिन अलग-अलग, that is the thing that you already have in your life and you're just acknowledging them और आप फिर उनको लिख रहे हो. वो है पहला part. The first thing is जो आपने लिखनी है 3 अलग-अलग चीजें that you're grateful for. For example, today I'll write, I'm so grateful for that I had an amazing session and I got to know 7 athletes. ठीक है. Second, it could be I'm so grateful for meeting my friends. Third, it could be I'm so grateful for my mother. Now tomorrow, those things I'm not going to repeat. ये एक अलग segment है. ये 3 चीजें अलग हैं. एक चीज दूसरा आएगा. What you're going to write is आप 5 बार लिखोगे उस चीज के बारे में जो भी आपके पास नहीं है और आप अचीव करना चाहते हो. What do you want to achieve in my life? Okay, that is the second activity. Okay. You're confusing it, ठीक है? Okay. Yeah. So That about the second activity, I was asking about the second activity. First activity, I know what to do. तो वो So you have to second write that activity, एक ही I'll activity write- को बार every day for the next 30 days. Every day till you don't achieve it. Till you don't achieve it, you're going to write it every day in the present tense. That's how it's done. Okay, 5 times every day till I don't achieve it. Okay. Exactly. And अगर आप में से कोई मेरा पर्सनल एथलीट होता तो ट्रस्ट मी मैंने 100 बार भी लिखवाया हुआ है, वो भी लेफ्ट हैंड से. That's how we reprogram our mind. Okay. ठीक है. अपने आप को रीप्रोग्राम करने का तरीका वो होता है that we It that's how has we to be break. both the exercises have to be done with the left. See, 3 things that you're grateful for आप अपने राइट हैंड के साथ कर सकते हो, बट जो ये वाली चीज है that you're attracting in your life, that is something that you have to do with your left hand. Okay? Okay. Cool. Second activity has to be done with the left. Okay. Yes, second activity has to be done with your left hand. चलो, Okay, ma'am. अब Sure. gratitude clear है सबको? And एक और चीज है, another life tip also with this, whatever. एक सेकंड, अब हम क्वेश्चन सारे एक सिर्फ लास्ट एक हैबिट बची है, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे, तब हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं. ठीक है. लेट मी जस्ट फिनिश इट अप.
so that the presentation is over. Done. Fourth habit हो गई gratitude. सबको clear है? Thumbs up. Okay, done. Cool. To do this Last. breathing. Yes, अभी ma'am. अभी आते हैं. जो भी क्वेश्चंस है एक बार के लिए होल्ड करो, बस एक बार हमें कर देता है, ठीक है? अब विजुअलाइजेशन की बात करते हैं. विजुअलाइजेशन करना कैसे है? आई विल जस्ट मेक यू डू इट एक बार, ठीक है? ऑल्सो कब करना है? उठते ही, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पावरफुल टाइम होता है उठते ही सुबह. आपने ब्रेथ वर्क किया, ब्रेथ वर्क आप 5 मिनट भी कर सकते हो. आपने अपने आप को फोकस बीच में ले आया आप, ठीक है? यू बेसिकली गिवन अ सिग्नल टू योर माइंड दैट यस आई एम इन कंट्रोल. और उसके बाद आप विजुअलाइज करते हो. एक वो टाइम है. एक है प्रैक्टिस से पहले विजुअलाइज करना. क्यों करते हैं प्रैक्टिस से पहले? हम अपने माइंड को वार्म अप कर रहे हैं. हम कैसा खेलना चाह रहे हैं. आपको अपने माइंड को सिग्नल देना पड़ेगा कि मैं ऐसा खेलता हूँ. दैट्स इट. दैट्स हाउ यू विजुअलाइज. एक सबसे और पावरफुल टाइम होता है सोने से पहले. व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड इज स्लीप व्हाइल यू विजुअलाइज. विजुअलाइज करते 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 कब सो गए, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है. अब हम अगर बात करें चैंपियंस के बारे में, ओके चलो ये हमारी प्रेजेंटेशन डन हो गई है यहाँ पे. ओके अगर हम किसी भी चैंपियन की बात करें, फॉर एग्जांपल माइकल फेल्प्स है, जो मैंने बोला बिफोर प्रैक्टिस, वो अपने हर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन से पहले ही यूज्ड टू ऑलवेज एंड ऑलवेज विजुअलाइज फॉर 40 मिनट्स. वो 8 साल के थे जब से उनके कोच ने उनको विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, और वो एक दिन में 2 घंटे की एवरेज से विजुअलाइजेशन करते थे. ही यूज्ड टू विजुअलाइज एवरीथिंग हैपनिंग. बिकॉज विजुअलाइजेशन इज व्हाट, आप जो भी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, पहले आपके वो माइंड में क्रिएट होना चाहिए. आपके सामने कोई भी चीज है, कोई भी चीज अपने सामने देख लो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फोन, इट कुड बी दिस. ओके ये सब चीजें कैसे बनी है? पहले किसी के दिमाग में आइडिया आया कि यस मुझे ये चीज बनानी है, ठीक है, एंड ऐसे बनाएंगे. उसका एक एग्जैक्ट, उनके पास एक पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग यू, ओके दिस इज अ फोन. ओके ये जब फोन बना, अगर ये जब ये फोन बना, तो किसी के दिमाग में ये आया होगा ना कि अब हमें एक कैमरा नहीं, हमें 3 कैमरे लगाने हैं, उसकी इतनी साइज होगा, उसका जो भी. तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. अगर किसी के दिमाग में क्लियर पिक्चर आई, ब्लूप्रिंट था, तभी तो उन्होंने उस चीज को वापस वहां पे क्रिएट करा ना. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद योर गेम. आप जैसा चाहते हो आप आउट एक्सट्रिंसिकली परफॉर्म करो, वैसे आपको अपने माइंड में सोचना है और सोचते रहना है और रहना है. दैट इज हाउ इट एक्चुअली बिकम्स. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है विजुअलाइजेशन का. आप जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आप उसको अपने पहले माइंड में क्रिएट करो, और उसके माइंड में उसको स्ट्रॉन्ग करते रहो, स्ट्रॉन्ग करते रहो, स्ट्रॉन्ग करते रहो, और एक दिन वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा. दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. एंड सो दैट इज हाउ वी हैव टू विजुअलाइज. ठीक है, अब मैं बहुत क्विकली आपको एक बार विजुअलाइजेशन करवाती हूँ. ठीक है, does everybody want to do it? Are you guys up for it? Yes, ma'am. Okay, cool. तो सबसे पहले बिल्कुल अपनी बैक स्ट्रेट करके शांति से बैठ जाओ. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग एन ऑडियो विद यू. वेट, ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है? बैकग्राउंड म्यूजिक की भी और मेरी भी क्लियर? या मैम. ओके कूल. सी ये वाला जो ऑडियो है, ये सेम ऑडियो मैं आपको भेजूंगी अपने सुबह के ब्रेथ वर्क के लिए. ठीक है, तो अब everybody just close your eyes. Okay, back straight, eyes closed, and focus on your breath. Long deep inhale and exhale. और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स होता हुआ महसूस करो. And now whatever goal you want to achieve, see yourself there, having already achieved your goal. Where are you?
What clothes are you wearing? How are you feeling? Finally, आपने जब अपना goal achieve कर लिया, this is something that you always wanted, right? How does it feel? Now what next once you've achieved your goal? Feel that joy, feel that happiness. And now, there is a mirror in a corner. Walk towards that mirror. How are you walking? How's your body language? How's the body language? And now look at yourself in the mirror. How do you look like? Once you've achieved all your dreams, कैसे दिखते हैं हम? And see any two people complimenting you. Who is it? And what are they saying? How does it feel having achieved and living your dream life? What's your dream life? And how does it feel when you're living it? और जो वो फीलिंग है, जो वो खुशी है, उसको यहीं पे इसी पल में महसूस करो. That feeling of living your dream life, of already achieving your dreams. Feel it right now, in this moment. Focus again on your breath. On your breath again. And जहां पे भी आप हो, feel yourself sitting there. In this moment, feel the happiness, the joy. And whenever you're ready, you can open your eyes. Still feeling the joy and the happiness.
And on the count of 5, slowly open your eyes. 3, 2, 1, and now. Yes, tell me. How was this? Okay, so I had to keep it very general. I'm sorry. Otherwise, अगर हम एक ही athlete के साथ करते हैं, then we keep it very specific. But अभी because everybody was from different sports, सबके goals थोड़े different थे. But देखो, intention क्या है? I want you to understand क्या करना है. ये background music है. इसी background music के साथ अब अपना breath work करोगे. पहली चीज, ठीक है? Second चीज, जो भी आपका goal है, आपका कोई monthly goal है, आपका कोई life goal है, you already have to feel yourself achieving it. आपकी जो मॉर्निंग की विजुअलाइजेशन है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए that has already happened. आपने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया है, ठीक है? जो आप अपनी प्रैक्टिस से पहले विजुअलाइजेशन करते हो वो प्रोसेस विजुअलाइजेशन होती है. प्रोसेस विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल जब खेल रहे हो बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंटली, तब आप कैसा खेल रहे हो, तब आप कैसे तो इट शुड बी मोर अबाउट द प्रोसेस, ठीक है? तो वो आपको हेल्प करेगा आपको टेक्निकली और ज्यादा स्ट्रांग बनने में. Is that clear with everybody? Yes, so with ma'am. this I am done. हमारे पास last 20 minutes हैं. So now the floor is up for and ready for any doubts. बताओ. Ma'am, I felt really good during the visualization process, and honestly, I felt like crying because I saw myself achieve everything, and the feeling of that all since I was 9, I was just trying to achieve all the struggles I've went through. It just felt so good, and there were 2 people who were there. I'm sorry, but you were there with me. I mean, as a psychologist, and you were telling that Kunal, you have done really well. You have worked hard, and the other person was maybe my father. He was like kind of happy. He didn't say anything. He was just looking at me, and I was looking at myself in the mirror, and I was like a complete different Kunal, more fitter, like kind of Rory McIlroy or something like that, and world number 1, achieved everything he wanted to achieve, 1 majors. So it was feeling very good. I think that I'm capable of doing that. It's just that some limiting beliefs and some parasite kind of thoughts come into mind, and they just don't allow my mind to work that way. But other than that, I'm ready to work on it. Wonderful. See, हमेशा एक चीज याद रखना, सब जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, anything that your mind can see, anything that your mind can conceive, you can achieve in your life. What does that mean? Conceive मतलब एक पिक्चर, आपका कोई भी पिक्चर अगर आपका दिमाग देख सकता है तो आप वो लाइफ में अचीव कर सकते हो. It's very simple. That's the rule. बात क्या है कि हमें उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, हमें अपनी अवेयरनेस डेवलप करनी है, and we have to keep pushing ourselves every day. ये जो 5 हैबिट्स हैं, 5 हैबिट्स, अगर आप इन हैबिट्स को हर दिन लगातार अगले 1 महीने करके देखो, you will see, you will not be the same person that you're sitting right here. You will not be. Just not be. See, and also इन्हीं सेम चीजों को अगर हम पर्सनल सेशन में कराते हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं, like we cater it according to the athlete, then it becomes a lot more effective. But right now, in a most general yet in the most precise manner, जो मैंने चीजें बताई हैं, इसको फॉलो करो 100%. ठीक है? और बताओ, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस, मनवेंद्र, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. Manvendra, what you can do is now write down your question on the group. I will answer it here because you're not audible. ठीक है? No, not. मैसेज को ग्रुप पे टाइप कर दो, ग्रुप पे टाइप कर दो. I will reply here. Okay? Okay, okay. Because आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. Yes, tell me. Or anybody else? Any other doubt? Ma'am, मेरा एक doubt. हाँ जी, बोलो. Ma'am, you said that about your routine, like when you become the best player in the world, and how will be your routine and how will you work?
But ma'am, if you go to see, it's not practical on our side now, because they have the all the facilities. They have everybody who can come and help them to do that. We have a school, हमारा बहुत कुछ और रहता है, so we don't have that. Yes, sir. Match that. म्यूट योरसेल्फ मनवेंद्र, एक बार आपके ना ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, म्यूट करके रखो. हाँ ठीक है. यस या Yeah. done. That's done. Okay, So cool. it's very difficult. See, you have to understand one thing. If you were to be the number one in your field right now in the given circumstances, then what? We have to only focus on the things that we control. When I'm talking about a routine, probably अभी आपको अगर स्कूल जाना है, ठीक है, वो चीजें हैं जो हमारे controllable factors में नहीं है. This is something that we have to do. उसके अलावा जितना जो time है, and when I'm talking about routine, I'm also focusing a lot on firstly the things that are in your control, and secondly the most important thing is what is it dominantly your mindset. Now I'll give an example about अभी हमारा इंडिया में नंबर 1 एथलीट कौन चल रहा है. इंडिया का नंबर 1 एथलीट बताओ. नीरज चोपड़ा. ओके ठीक है. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. ठीक है. राइट नाउ I think today only he became the world he got a silver medal for India in the world championship, which is huge. पहले हमें सिर्फ एक बार, आज से 24 साल पहले हमें एक ब्रॉन्ज मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप में. So he's basically breaking all the records for India. Okay. Now if you see, he just became an Olympics champion last year. Okay. From the last 2.5 years, this guy, from the last 2.5 years, he was not on social media. His social media was only and only handled by his team, the managing team. He was not on WhatsApp, and his phone has been on an airplane mode from the last 2.5 years. 2.5 years. और वो ओलंपिक से पहले वो साल में ऑन एन एवरेज एक बार घर गया था, सिर्फ एक या दो, वो भी ओवरनाइट स्टे करने के लिए एक दिन भी नहीं गया. He did not stay in his house for more than a day. He used to just go there, visit for a few hours and come back. Go there, visit for a few hours and come back. That also just once a year. No Holi, no Diwali, no Bhai Dooj, no Rakhi, nothing. Okay. So see, what does this look like? Doesn't it look like a world champion ka routine? Doesn't it already look like that? Yes, this is what I'm talking about. So this is something that I say, from the last 2.5 years, he was already living like a world champion. He was already living like a world champion. हमने बस मेडल पिछले साल देखा है, बट उसके जो रूटीन है, उसका जो माइंडसेट है, वो तो पिछले 2.5-3 साल से यही है. And I'm telling you, if you go back, if you learn about this person, you will understand exactly 3 years back, इसको पूरे nation ने obsolete बोल दिया था. Obsolete is what? That this athlete is gone because he injured his elbow. And उनका जो sport है javelin, without elbow, you know, after a major elbow injury, coming back is impossible. उस टाइम में जब उसको नेशन ने बोल दिया, सब लोगों ने आसपास में, उसके कोच, उसका मेन कोच भी उनके साथ लड़ाई हो गई, he left him. ऐसे टाइम पे when everybody leaves you, उस टाइम पे अपने आप को डिसाइड करना कि नहीं, I'm going to achieve my goals, I am going to do it. And then he started living like an Olympics champion. It was not that he was doing it consciously. वो नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है. But he did all of these things. And for the next 2.5 years, he lived like an Olympics champion. He got his elbow perfectly fine. And what he did last year, और उसके बाद तो I think ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होता, कोई स्पोर्ट्स आर्टिकल नहीं है जिसमें उसका नाम नहीं आ रहा है इंडिया में. So see, that's what he's done. This is what I'm talking about. I have just quoted Neeraj Chopra because everybody in India knows him right now. Okay, you can pick any athlete. You can learn. तभी मैं बोलती हूँ, अपने फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स के बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो. तो अभी आपका अगर स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी का कोई भी रूटीन है, उस रूटीन में भी आप अपने आप को एक चैंपियन की तरह रह सकते हो. कितना टाइम मिलता है, फोन कितना यूज करते हैं हम, ये भी तो देखो. कितना टाइम हम इन सब चीजों पे लगा रहे हैं. अपने आप को एक सेट स्टैंडर्ड टाइम डालो. यू नो, गिव योरसेल्फ टाइमिंग्स कि अगर मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो मेरी क्या like, you know, what am I actually indulging in? What are the activities that I'm actually doing? And honestly, see, this might sound a little harsh, but you need to have fun. Fun and enjoyment is very, very important. But that's a very different fun that champions actually do. उनके लिए कोई दूसरी लाइफ नहीं होती है, to be very honest. They are so much in their game.
So you now this is so this is my reply for that question, that I do understand कई चीजें हैं जो आपके controllables में नहीं है, but उसके बावजूद जो बाकी चीजें हैं, are you living like a champion in that? Even if you're going to school, are you living like a champion there? Are you working with the sports, with the whatever your goal is? Are you there with that champion mindset? Are you? Or are you not? That's your choice. जो मैंने विराट कोहली की बात बताई है, वो उसकी वहां पे दिल्ली की रोडवेज की बस का इंसिडेंट है, जब उस लोगों को बोलता था मैं तो इंडियन प्लेयर बनूंगा, मैं तो इंडियन कैप्टन बनूंगा, whatever. So see, so wherever you are, so for example, I'm telling you one thing. It's basically in a way, if you are Shian, okay, if you're going to market, you'll still be Shian, right? आप अकरम या विक्रम तो नहीं बन जाओगे ना? You're going to be Shian, है ना? So now what I'm saying is, whatever your goal is, once you've achieved, you are going to be that person everywhere. अगर कोई ओलंपिक चैंपियन है, कोई वर्ल्ड चैंपियन है, कोई इंडियन टीम का प्लेयर है, तो वो कहीं पे भी जाए वो वही रहेगा. So that is all that you have to do. Whatever your goal is, wherever you go, you have to keep that goal in your mind, that I am this person. Every action of yours will be, related to that. That's it. That's all that it has to be. Same goes for like yes. Same goes for other personal things also, like I want to increase my confidence, I want to act in a very mature way, so I can pick up a person who's like that and just visualize every day, write with my left hand that okay, I need to achieve this month apart from the game. Impersonation effect कहते हैं हम इसको. आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है, you find out one person who already has that. You read about that person, you learn about that person, you study that person, you see that person, and you start incorporating उनकी क्या activities हैं, उनकी क्या habits हैं, उनका क्या body language है, और आप उसको अपने आप में add करना शुरू कर दो. So you learn a lot. That's what we call vicarious learning also. Vicarious learning. Okay ma'am. Okay, yeah. Got it. ठीक है. And anybody else? So मनवेंद्र, आपका question answer हो गया? Was that clear? So ma'am, your answer was basically just act like you are already doing it, even in anything you do, not only your sports. Like, so if Okay. you, even if you're not playing your sport, you act like you're the best in other things also you do, so it will reflect in your sport also. See, what is your aim? What is your aim? Batao. Tell me. I will simplify it for everyone. Like, obviously playing for the country. What sport? Cricket? Okay. Okay, cool. I want all of you, if you want to, okay, just quickly for 10 seconds, just close your eyes and just feel that you are wearing the Indian jersey right now. Right now, you are wearing that Indian jersey. Okay, that's it. You're wearing that Indian jersey. पीछे इंडिया है, आपका नाम लिखा हुआ है. What is your jersey number? How does the Indian jersey feel on your body? And look at yourself in the mirror. How do you feel? Now, open your eyes. अब आपके दिन की सारी एक्टिविटीज, everybody can open their eyes. अब आपके दिन की सारी एक्टिविटीज वही जर्सी पहन के होनी चाहिए बस. Mentally that has to be your filter. So how is it going to be your filter? For example, I'm sitting with my family and I'm wearing an Indian jersey mentally. And मैंने एक मूवी देख रही हूँ, फिर मैं दूसरी मूवी देख रही हूँ, मैं तीसरी मूवी. क्या मैं एक जर्सी पहनने के बाद can I afford all of these things? I can't. What should I rather be doing? I'll do that. What should I rather be doing? I'll do that. इससे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो अपने काम करने में. अगर आप ये अपना दिन देखोगे, हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आपके दिन में कितनी आपके एक्शंस हैं, कितनी आपकी एक्टिविटीज हैं, कितने आपके मिनट हैं जो एक्चुअली में आपके गोल के लिए स्पेंड हो रहे हैं. बाकी टाइम तो हम वेस्ट कर रहे हैं सोचने में, कुछ और करने में, ये करने में. तो मेरा जो आंसर है वो ये है, ऑलवेज हैव अ मेंटल फिल्टर. व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, just imagine, feel and visualize that you already are that person. अब क्या वो इंसान ये काम करेगा? I actually had yesterday only, I had one of my athletes, like
playing a very big tournament, and he very randomly, they're out actually in USA, and he asked me कि ma'am, I have my family friends here and this and that, and हम सोच रहे हैं weekend पे हम थोड़ा get away चले जाएं California, what do you think? And I was like, sounds good. And he's like, हाँ वो 3-4 दिन है, थोड़ा casino है मैम वहाँ पे, ये वो करके. And he's a big guy, he's like 28, okay? And like, what do you think? I was like, fine, let's do one thing very quickly. अभी उनका tournament है अगले 7 दिनों में. All I did was, I was like, just close your eyes, just you're in the tournament, आप tournament cheat गए हो, ये वो करके. Now, just एक बार come back to this moment. अभी tournament जीतने से 7 दिन पहले आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए आपको? What do you think? क्या हम करेंगे कि हम tournament जीतेंगे? तो mental filter. मैं tournament मेरा 7 दिन में है, क्या मैं अभी 3-4 दिन vacation मार सकती हूँ? अगर आपको लगता है ये मारने के बाद, नहीं, सबके लिए नहीं होगा. कई लोगों को लगता है कि हाँ मैं 4 दिन वेकेशन मार के आऊंगी, मैं 2 दिन प्रैक्टिस करूंगी तो मैं अच्छा खेलूंगी. कई लोग ऐसे भी होते हैं. तो फाइन, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे करने से आपको टूर्नामेंट जीतोगे तो आप जीत जाओगे, डन, तो करो. अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो यू हैव योर आंसर देयर. तो हर एक्टिविटी करते हुए मेंटल चेक रखो, क्या ये इंडियन जर्सी पहनने वाला वर्जन मेरा करेगा तो करो, नहीं करेगा तो मत करो. यू हैव योर आंसर राइट देयर. It's that simple and it's that difficult also. बहुत सारी चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें लाइफ में अपनानी पड़ेंगी. Sports is a lot about sacrifices, but that's the fun of sports, right? Yeah. Okay. One more question. Any other question? मैम मेरा एक क्वेश्चन है. Yes. मैम जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि मुझे इंडिया अंडर 19 के लिए डेब्यू करना है, बट मेरे शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं मुंबई स्टेट के लिए भी डेब्यू करूं, मतलब इस ईयर. तो मैं उसको विजुअलाइज करूं या अपनी इंडिया अंडर 19 को विजुअलाइज करूं? मैं इसमें कंफ्यूज हो गया. देखो, सबसे पहले तो एक चीज है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है. अगर इंडिया अंडर 19 आपने खेलना है या आपने डेब्यू करना है तो आप उसका स्टेप्स आओ. अभी आप कहाँ पे हो? पहली बात, अगर आप अभी यहाँ पे हो और नंबर 10 पे है इंडिया अंडर 19 में डेब्यू करना, तो उससे पहले वाले सारे स्टेप्स देखो ना. तो यू कैन ऑल्सो, ये प्रोसेस विजुअलाइजेशन होते हैं जिसमें हम अपने एक एक स्टेप को अचीव करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, तो आप हर दिन डोमिनेंटली आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, सुबह उठते ही अगर आप विजुअलाइज करो तो आप अपने आप को इंडिया अंडर 19 डेब्यू करते हुए देख सकते हो. प्रैक्टिस से पहले आप अपने आप को अपने बॉम्बे डेब्यू में देख सकते हो. हमेशा एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है. मतलब यू कैन प्ले अराउंड विद योर विजुअलाइजेशंस अ लिटिल. अपने प्रोसेस पे, मतलब अपनी डे टू डे अपने आप को बेटर बनाने पे ज्यादा विजुअलाइज करो, बट दिन में एक बार अपने एंड गोल को जरूर देखा करो. दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन. Ma'am, I had one question, ma'am. Yes. When I'm playing, when I'm practicing, I'm working on my technique, everything is fine. I'm playing on a golf course, everything is fine. But when I go to not any other tournament, just a qualifying tournament like the Q School, which decides the whole year, I'm standing on the first tee, 5-6 holes. My mind is just different. I've never seen this brain of mine, and it is acting very weird, different. So why does that happen when I don't want it to Performance happen? anxiety. Performance anxiety. That's performance anxiety. And when you say that Yeah. I don't want it to happen, but then is your mind in your control? जो हमने starting में बोला था, when the mind is not in our control, then it's not working for us. We are working for it, right? अब XYZ reasons हैं. It could be self-doubt, it could be limiting beliefs, it could be having a low self-efficacy, it could be low self-confidence. बहुत सारी चीजें हैं that could be contributing to it, right? So we have to address what all is actually going on in our life, and then once we understand it, we have more awareness, then we start working. That's how we actually start working on the performance anxiety. But if you want to know a term कि वो क्या होता है, वो performance anxiety है clearly, and a lot of factors contribute to performance anxiety, so we have to understand कि क्या contribute कर रहा है. तो अगर जो चीज से performance anxiety हो रही है उस चीज को हम eliminate करेंगे, फिर performance anxiety चली जाएगी, खत्म. ठीक है, फिर हम अपना प्री परफॉर्मेंस रूटीन बनाते हैं. उससे क्या होता है, हम अपने आप का मेंटल वार्म अप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. दैट्स हाउ इट्स गोना बी डन. ठीक है, ओके. एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज आई विल बी रैपिंग अप द सेशन. नो, ऑल क्लियर? All right. I'm clear, ma'am. Chalo, wonderful. Okay. So thank you so much. It was lovely having you all here. Okay. एक चीज होगी, जो ये 5 हैबिट्स हैं, आई एम श्योर आपने लिख लिया है. जो भी आपने आज लिखा है उसको एक बार पिक्चर क्लिक करके ग्रुप पे शेयर कर दो.
so that अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो हम एक दूसरे से सीखेंगे. One thing I'll tell you guys, one thing, okay? Start uplifting people around you. Start inspiring people around you. Start telling them. I mean, see, honestly, I have been there where you are. I've been an athlete. I know बहुत competitiveness होती है. But there is one universal law which says what you give is exactly what you get back. तो कभी कभी there could be a partner, there could be somebody in your ground जो कभी भी आपकी मदद नहीं करता है, but start being that person जो सबको inspire करता है, जो सबको uplift करता है, because you never know from where you will get that. ठीक है? Because always remember what we give is exactly what we'll get back. तो अगर हम किसी को बहुत jealousy, competitiveness देंगे, हमें वापस भी वही मिलेगा. अगर हम सबके साथ बहुत warm, बहुत kind, बहुत inspiring होंगे, इससे क्या होता है? You become a better person yourself. आप सबको ये चीज समझाओ, सबको आप मेंटली बेटर बनाओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम एक लिमिट तक आके हम नेगेटिव होंगे. बट इफ आई एम कॉन्स्टेंटली अपलिफ्टिंग पीपल अराउंड मी, आई कैन नॉट बी नेगेटिव. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल थिंग, लास्ट थिंग. Everybody asks me, ki how do you take care? Even my contemporaries, other psychologists, my colleagues, they ask me, how do you take it? What do you do to, like recover yourself from all of these things? And I'm like, I don't get drained by my work. And there are times मेरे पास athletes या मेरे clients आके बहुत negative चीजें बोलेंगे. But to be very honest, by God's grace, I never get, drained or negative. You know why? Because I know if I am giving out positivity, if I am uplifting somebody, I am gonna get it back. I don't know from where. So see, when you have that belief, you will see कोई randomly आके आपको uplift कर देगा. So become that light, become that person जो सबको बहुत ज़्यादा uplift कर रहा है, बहुत inspire कर रहा है. That will help you a lot in your character also. ठीक है? तो ये जो 5 habits हैं, जो भी आपने भी लिखा है, उसकी ग्रुप पिक्चर क्लिक करके ग्रुप पे शेयर करो and follow these 5 habits every day. ठीक है? And WhatsApp, जो Win Within पे हमारा ग्रुप है, जो हमारा अकाउंट है, you can be in touch with me there. WhatsApp number पे I don't operate it much, and I think in the next 2-3 days it's going to go to my manager. तो मैं बिल्कुल भी operate नहीं करूँगी इसको. But Win Within account को I do open it once every day and I check it. So I'll be in touch with you from there. Cool? Done? Yes, ma'am. All right. Thank you And I'll very much, upload- ma'am. Okay. Thank you so very much for this session. Thank you. Really Thank you. grateful to attend this. Chalo, wonderful. And I will try and yeah. If I have to book a session with you, how do I like over WhatsApp? Because you were saying the WhatsApp number. See, for personal sessions, you can do it on WhatsApp, because even if it goes to the manager, that's what the manager is for, to book you, to give the slots to everyone, right? So I'll be available Okay. there. Yeah, that won't be an issue. Okay. All right. Cool. Okay, Done. Thank Chalo. you, ma'am, once again. All the very best, guys. Thank you. And also one thing is, मैं इसका जो link है Zoom का, अभी ये meeting का, मैं उसको डाल दूंगी आपके group पे, ठीक है? So that you guys can see it 24 hours के लिए आप लोगों को available होगा ये. Okay? Thank you. Chalo. Ma'am, will- Okay. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. 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 Bye bye. Yes, Shian, you were saying something? मैम इसके बाद कोई एक और सेशन होने वाला है कि this is the only one? See, Shian, now I think we'll be taking in charge sessions, ठीक है? Group session. तो अभी आपने decide नहीं करा है कब, but depending on the availability, I'll try to do one in August, ठीक है? We'll put it up on the group, like on the group नहीं, on the account, Win Within का, ठीक है? Okay. चलो, okay, all right. Thank you. Bye Thank bye. you Take so much, care. ma'am. Thank you so much. Bye. Bye bye. See you. Bye.